Good morning, my lovely students. How are you all? I hope everyone is good. So, students, today we are going to start a second chapter of English grammar, that is kind of sentences. Okay, students. So, firstly, you know about what is a sentence. Okay, student. So, what is a sentence, student? A sentence is a group of words which make complete sense. सेंटेंस जिसको हम हिंदी में क्या बोलते हैं, वाक्य, जो क्या होता है, ग्रुप ऑफ वर्ड्स विच मेक कंप्लीट सेंस. जो ग्रुप ऑफ वर्ड्स मींस जो वर्ड्स होते हैं उनका एक ग्रुप होता है जो हमको क्या देते हैं, पूर्ण अर्थ देते हैं, कंप्लीट सेंस देते हैं. सो नाउ वी कैन से अ सेंटेंस इज अ ग्रुप ऑफ वर्ड्स. एंड सेकंड, यू मस्ट रिमेंबर दैट अ सेंटेंस हैज अ सब्जेक्ट एंड अ वर्ब कॉम्बिनेशन. ओके, नाउ इट हैज अ group of words and complete thoughts. Now, student, I'm giving you a simple example that a good Rohan boy is. So, this is a complete sentence. Okay, so this is a group of words, but not a complete sentence. I'm writing a good Rohan boy is. Now, student, this is a sentence. Yes, notice, have you understood it? No, because this group of words not making any sense. So, here the right sentence, correct sentence is here, Rohan is a good boy. Okay, students, so this is a complete sentence. Okay, student, now we all have understood. So that means the group of words make any sense, so it is a sentence. Yes, you notice that a group of letters that make a sense is a word. Clear? In the same manner, a group of words which make complete sense is called a sentence. So we can say any group of words cannot make a sentence. देखिए कोई भी group of sentence होते हैं वो group of words होते हैं वो sentence नहीं कहलाते. Okay, student. So, student, you notice that in this example that a good Rohan boy is. This is a group of words that but not make a complete sense, not make a complete thought. This is not a sentence. But we write a sentence. Rohan is a good boy. So, Rohan is a good boy. Yes, you know that we all have understood. That means a group of words make any sense. Yes, it is a sentence. कि रोहन एक अच्छा लड़का है. So, this is called a sentence. ये क्या कहलाते हैं? Sentence कहलाते हैं. Okay, student. So now let's start the kinds of sentences. Yes, sentences are mainly divided into 4 types. Okay, number 1 declarative. Declarative as a जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य. Number 2 as the interrogative जिसको हम बोलते हैं प्रश्नवाचक. Number 3 is here imperative sentence is also called in Hindi as a आज्ञा या प्रार्थना सूचक. Number 4 is here exclamatory sentence जिसको हम लोग बोलते हैं विस्मयादिबोधक. Okay, so sentences have 4 types: declarative, interrogative, imperative and exclamatory. Okay, we will discuss one by one. Okay, number 1 is here declarative sentence. So what is a declarative sentence? Yes, a sentence that states or declares something is called a declarative sentence. Declarative sentence जिसको हम बोलते हैं साधारण वाक्य. ये वो sentence होते हैं जो जिसमें किसी व्यक्ति, वस्तु अथवा किसी घटना के संबंध में साधारण कथन होता है, उसी को हम क्या कहते हैं, declarative sentence. Yes, it's state or declare something. मतलब declare means क्या होता है, घोषित करना, है ना. So जिस वाक्य में स्पीकर अपने कथन को दृढ़ता पूर्वक कहता है, जो साधारण वाक्य के रूप में बताता है, वही हमारे क्या होते हैं, डिक्लेरेटिव सेंटेंस. ओके, यू मस्ट रिमेंबर थिंग दैट इट ऑलवेज एंड विद अ फुल stop, या we can say a period. Okay, so it always end with a full stop. You can notice the example. Number 1 example is given here. The sandwich is tasty. You can see the image of sandwich. Yes, so here we are telling an information of about the taste of sandwich. So sandwich is tasty. So this is a declarative sentence. Number 2, she is a beautiful girl. Okay, student, we are defining or informing the beauty of a girl. So and with the full stop. So this is a declarative sentence. ये क्या कहलाते हैं हमारे, declarative sentence. Okay, so what is a declarative sentence? A sentence that states or declares something is called a declarative sentence. Then we can say it is also called a simple sentence. Okay, it always ends with a full stop. Clear? Now
सेकेंड वन इज हियर एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस, जिसको हम क्या बोलते हैं, प्रश्नवाचक वाक्य. सो इंटेरोगेटिव सेंटेंस, अ सेंटेंस दैट आस्क अ क्वेश्चन इज कॉल्ड एन इंटेरोगेटिव सेंटेंस. जब भी हम किसी से क्वेश्चन पूछते हैं, किसी के बारे में या कुछ पूछते, तो हियर वी यूज एज अ इंटेरोगेटिव सेंटेंस. ओके, जब किसी से हम कोई क्वेश्चन पूछा जाता है, विच आर द WH वर्ड्स बाय आस्किंग ए क्वेश्चन, what, where, who, why, or how. So here this sentence are used to ask question and they end with the question mark. और किससे end होते हैं, question mark से. So examples are given here. Number one, where is the aeroplane? So starting for WH word and end with the end with the question mark. So we have to put a question mark at the end of this sentence because it is an interrogative sentence. Next one is here, what is your name? आपका नाम क्या है? So it simply you notice that it asks a question, what is your name? Starting from WH word and end with a question mark. Number third is here, how are you? आप कैसे हैं? So here start with the WH word. WH word का means क्या होता है बच्चों? जो भी हमारे जो sentence W से, जैसे what, where, why, who से start होते हैं, और H का means क्या होता है? H will here we use as a word how. Okay, so this is a WH word. WH we can say WH family. So starting for WH word and end with a question mark. So this is the interrogative sentence. So when you read a sentence, where is the aeroplane? So it's asking a question, aeroplane कहाँ है? Second, what is your name? आपका नाम क्या है? Now how are you? आप कैसे हैं? So you notice the sentence that it asking a question. So end with the question mark. So this is a interrogative sentence. Okay, you can see images of what, where, why, who or who, where we use these words in the sentence. देखिए, what you use what to ask about thing. जब भी आप किसी की thing के बारे में आप पूछना चाहते हैं, कुछ पूछते हैं, तो here we use as a word what. Second one, you use where to ask about place. जब भी हम किसी जगह के बारे में किसी से पूछते हैं, तो where we use as a word as a where. So where is your home? आपका घर कहाँ है? तो place की बात हो रही है, तो here we use as a WH word where. Number third is here you use why to ask about a reason. जब भी हम किसी reason के बारे में पूछते हैं, तो here we use as a WH word why. Number fourth is here who. You use who to ask about a person or people. आप किसी के बारे में पूछ रहे हैं, who are you? तुम कौन हो? So here we use as a who. Now next one is there you use how. How कहाँ पर use करेंगे? To ask about manner. आप किसी भी manner means तरीके के बारे में आप किसी से बात कर रहे हैं, किसी से question put up कर रहे हैं, so here we use as a word how. Okay students, so I hope you have to clear the interrogative sentence. Okay, now let's start the next sentence as an imperative sentence. So students, what is the imperative sentence? Yes, imperative sentence that express a command, a request or a desire is called an imperative sentence. Imperative sentence जिसको हम क्या बोलते हैं, आज्ञा या प्रश्नवाचक सूचक या प्रश्नवाचक वाक्य. अब हम देखते हैं, सॉरी, आज्ञा या प्रार्थना सूचक, सॉरी, प्रश्नवाचक होते हैं हमारे इंटेरोगेटिव सेंटेंस, और जो आज्ञा या प्रार्थना सूचक होते हैं हमारे इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, सो इंपेरेटिव सेंटेंस, यस, यू नोटिस दैट इट इज सेंटेंस दैट एक्सप्रेस अ कमांड. जब हम किसी को कोई कमांड दे रहे हैं, किसी से कुछ रिक्वेस्ट कर रहे हैं, किसी से डिजायर कर रहे हैं, ये इच्छा हमारी है ना, सो इट इज कॉल्ड अ इंपेरेटिव सेंटेंस. ओके, सो इंपेरेटिव सेंटेंस का उपयोग अधिकतर आदेश देने, एज अ कमांड, निर्देश देने के लिए करते हैं, लेकिन इसका उपयोग प्रार्थना करने या सलाह देने के लिए भी किया जाता है. ओके, आई एम गिविंग यू एन एग्जांपल, दैट्स प्लीज ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर. ओके, सो प्लीज ब्रिंग मी ग्लास ऑफ वाटर एंड गिविंग यू अ ऑर्डर. मैं आपको क्या दे रही हूँ? कमांड दे रही हूँ, ऑर्डर दे रही हूँ. सो दिस सेंटेंस विल कम इन द कैटेगरी एज अ इंपेरेटिव सेंटेंस. नेक्स्ट एग्जांपल इज हियर, Rohan, shut the door. Okay, so here you notice Rohan, shut the door. I'm giving you a command. Read, shut the door. Door बंद कर दो. Rohan, door को बंद कर दो. So I'm giving you a command also. So this is an imperative sentence. And next one is there. I'm giving an example of advice that as a please consult a doctor. Okay, to consult a doctor. So here we am giving you advice. So please consult the doctor. And next one is here. I'm giving another example. Respect your teacher. मैं आपको दे रही हूँ, आपसे रिक्वेस्ट भी कर रही हूँ, नॉट अ कमांड कि रिस्पेक्ट योर टीचर. आई एम सिंपली सेज दैट प्लीज रिस्पेक्ट योर टीचर, रिस्पेक्ट योर एल्डर्स एंड रिस्पेक्ट योर यंगर्स आल्सो. ओके, सो दिस इज दिस सेंटेंस विल कम इन द कैटेगरी ऑफ इंपेरेटिव सेंटेंस. इंपेरेटिव सेंटेंस जिसको हम क्या बोलते हैं,
आज्ञा सूचक वाक्य. Clear? Okay, student. So now let's start the next sentence, next category of a sentence, that is exclamatory sentence. So first of all, you have to know about the exclamatory sentence. Yes, a sentence that expresses some strong or sudden feeling is called an exclamatory sentence. जब हम जिस सेंटेंस के बारे में बात करते हैं एक्सक्लेमेटरी, तो हिंदी में हम क्या बोलेंगे इसको, विस्मयादिबोधक. ओके, जब कोई भी सेंटेंस, जो कोई भी वाक्य क्या एक्सप्रेस करता है सम स्ट्रॉन्ग और सडन फीलिंग, हम किसी के बारे में बात करें, अचानक ही हम कोई सडन फीलिंग आती है, उसको हम क्या बोलते हैं, ऐसे एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. देखिए इन हिंदी वी कैन से ऐसे किसी वाक्य जिसमें सुख, दुख या कोई आश्चर्य या दया या क्रोध आदि का भाव प्रकट होता है, वो सेंटेंस क्या कहलाते हैं, हमारे विस्मयादिबोधक, जिसको हम बोलते हैं एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस. अचानक हम किसी चीज को देखते हैं तो हमको क्या लगता है, वो चीज बहुत अच्छी लगती है. ओ हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज, हम किसी सिटी में हम विजिट करने गए हैं और सिटी आपको बहुत अच्छी लग रही है, सो वी कैन से हाउ ब्यूटीफुल दिस सिटी इज. सो हियर वी यूज एज अ exclamatory sentence. Now second thing you must remember that it always ends with the exclamation mark. जो भी exclamatory sentence होते हैं वो end किससे होते हैं, हमारे exclamation mark से. You can notice example, what a beautiful day, when we see a day is very pleasant today. So here we speak just like that, what a beautiful day. So here we use as exclamatory sentence. अचानक ही हमको कोई चीज ऐसे सरप्राइज होती है, हम देखते हैं कि हमको बहुत सुंदर लग रही है, तो here we use as a word as a exclamatory. Now next one is here, he is such a nice boy. Okay, so here you notice that he is such a nice boy. So nice boy, after that we have to put a exclamatory sign. So here you put exclamatory sign, he is such a nice boy. When we talking about हम किसी के बारे में, when we start speaking as a certain feeling, when we express a certain feeling about something, so here he is such a nice boy. So here we put a exclamation mark. So this is a exclamatory sentence. Clear that? Okay, so students, so now this is all about the kinds of sentences. Okay, now students, let's quickly revise what we have learned in this lesson. हम इस lesson में क्या लिखा? Okay, let's revise again. Yes, so there are 4 types of sentences, as the declarative sentence, interrogative sentence, imperative sentence, and exclamatory sentence. So firstly, we will revise the declarative sentence. So declarative sentence tells to something. So this is all जिसको हम हिंदी में बोलते हैं साधारण वाक्य. This is a declarative sentence. A sentence that states or declares something is called a declarative sentence. Second thing you must remember that it ends with a period. Means full stop. ये ends किससे होता है? Period से. Okay. Now next one is here interrogative sentence. So what is interrogative sentence? A sentence that asks a question is called an interrogative sentence. Second thing you must remember, ends with a question mark. ये ends किससे होते हैं? Question mark से. Number third is here exclamatory sentence. Yes, exclamatory sentence shows strong feeling. Okay, express a command, a request. Notice that exclamatory sentence express a strong feeling or sudden feeling. You can say is called an exclamatory sentence. Okay, it ends with the exclamation mark. End किससे होता है? Exclamation mark से. Now next one is here imperative sentence. Yeah, imperative sentence, a sentence that express a command, a request, a desire is called an imperative sentence. Imperative sentence जिसको हम क्या बोलते हैं? Yes, सूचक वाक्य बोलते हैं imperative sentence को. Yes, you know about this? Yes, this is the imperative sentence and it ends with the period or exclamation mark. So you notice that the declarative sentence and imperative sentence end with the period. Okay, so now you must remember that every sentence begin with the capital letter. You notice the जो भी हमारा जो प्रत्येक sentence start होगा किससे start होगा? Capital letters. You must remember. Okay, now second thing is here a full stop, we can say also period, is placed at the end of every declarative or imperative sentence. Clear, students? Now next is here, you notice that the question mark is placed at the end of every interrogative sentence. जब भी interrogative sentence जब भी end होगा, so you have to put a interrogative mark. Now number 4, as the exclamation mark is placed at the end of
एवरी एक्सक्लेमेटरी सेंटेंस, जो भी सेंटेंस जब हमारा एंड होगा तो उसके एंड में हम क्या यूज करेंगे, एज अ एक्सक्लेमेटरी मार्क। ओके स्टूडेंट, सो दिस इज रिवाइज ऑफ टाइप ऑफ sentences. So I hope this is clear to you.